Okay, so we will start now. See, that day I have shown you one video, okay, regarding the adrenal gland. Okay, what we have seen there, that there is adrenal cortex and adrenal medulla. Adrenal cortex से क्या क्या secrete होता है? Glucocorticoid, mineralocorticoid and certain amount of androgen. Yes. You can write in the chat box if you have any doubt. So this already we have discussed about the adrenal gland. We have seen the anatomy of adrenal gland in the last lecture. Okay, so मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था कि adrenal gland में we will be studying the adrenal cortex. Okay, adrenal cortex में क्या क्या होता है, what are the agonists, what are the antagonists, that we will be studying. Adrenal medulla secretes the adrenaline and noradrenaline. So that part आपने already sympathetic nervous system में आपका cover हो गया होगा. So that we have not to study here. See, because according to your syllabus, if you will see your syllabus, ठीक है, यहाँ पे लिखा है see what we have covered. ये हमारा हो गया है पार्ट, यूट्रिन स्टिमुलेंट हो गया है, थायराइड एंटी थायराइड हो गया है, पैराथायराइड इज रिमेनिंग. ओके, एंड हियर व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, you have to study the biosynthesis, mechanism of action and pharmacology of adrenocorticoids and corticosteroid antagonists. सिर्फ इसका ही पढ़ना है हमें, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन का नहीं पढ़ना है, बिकॉज वो पैरासिम्पेथोलाइटिक्स में आता है. पैरासिम्पेथोलाइटिक्स में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दैट बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स एंड ऑल दैट ऑलरेडी यू हैव स्टडीड. ओके, तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी विल बी गोइंग. तो आज मेरे पास 3 टॉपिक्स है, तो आज का लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा. तो फर्स्ट वी विल बी सीइंग द, उस दिन मैंने आपको ऑलरेडी वो वीडियो दिखाया था दैट देयर इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेड्यूला, बाहर का पार्ट किस कलर का होता है, अंदर का किस कलर का होता है, व्हाट आर द 3 लेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, दैट इज द जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेस्टिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस. ओके, देन देयर इज एड्रेनल मेड्यूला. व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, दैट डे आई हैव टोल्ड यू, वो हम फिर से पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन में. सो देयर वी विल बी रिपीटिंग. अभी हम डायरेक्टली आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द स्टेरॉइड्स. ओके, बिफोर गोइंग फर्दर, ऑल ऑफ यू नो दैट हमने एक स्टेरॉइड पहले भी पढ़ा है. In case of cardio, you cannot say that it is a steroid, but it contains the steroidal nucleus. ओके, आप हमने ऑलरेडी ड्रग्स यूज इन द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में वी आर यूजिंग डिजिटालिस. ओके, डिजिटालिस इज आल्सो नोन एज कार्डियोटॉनिक. डिजिटालिस का जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था मेडिसिनल केमिस्ट्री में, देयर वी हैव रेड दैट इट कंटेन्स साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन रिंग. ओके, सो दैट इज द स्टेरॉइड न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट इन ऑल द स्टेरॉइड. तो ये आपको वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं, what is the name of IUPAC name of the steroid nucleus. So that is cyclopentano per hydrophenanthrin ring. Okay, so that is the chemistry part. Now we come to the mechanism of action of steroids. तो इसके लिए पहले आप ये देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम लिया है, this has been taken from KD Tripathi. Okay, now और ये आपको corticosteroid चैप्टर में नहीं मिलेगा ये डायग्राम. It is given in the chapter pharmacodynamics. ओके, सो आपके पास अगर बुक है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. इट इज नॉट देयर इन स्टेरॉइड्स, वहाँ पे सिर्फ आपका रिटन मटेरियल है. दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम द फार्माकोडायनामिक चैप्टर ऑफ द केडी त्रिपाठी. ओके, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स है ना वहाँ पे आता है. सो दिस रिसेप्टर इज कॉल्ड एज द GR रिसेप्टर. ओके, दैट इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर. नाउ व्हाट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑल ऑफ यू नो. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक होता है सेक्स स्टेरॉइड. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर रिलेटेड विद द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन अवर ब्लड, इसलिए उसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं. अंडरस्टूड. मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज रिलेटेड विद द लेवल ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम आयंस हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस, वाटर हो गया. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड. ओके, नाउ सी एज यू कैन सी दिस. पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसेप्टर में ये जो डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर मेंशन्ड व्हाट आर दे. ओके, सो दिस, ये जो आप एंटायर स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द सेल. ओके, ये जो आपका पिंक का, जस्ट अ मिनट, शेयर द स्लाइड.
नाउ यू कैन सी इट हियर. सो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है, दिस आउटर मोस्ट पिंक लाइनिंग, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, और ये अंदर साइटोप्लाज्म है. ऑल ऑफ यू नो दिस. ओके, दिस इज योर साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर न्यूक्लियस. ओके, सो बेसिकली जो GR रिसेप्टर होता है, दैट इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर. इट इज बेसिकली अ रिसेप्टर विच इज अ न्यूक्लियस रिसेप्टर. जैसे हमने पढ़ा था ना थायराइड हार्मोन में, so this is also a nuclear receptor, but it is present in your cytoplasm. See, you can see the position. ये आपका रिसेप्टर है. See this, ये जो 5 के जैसा बना हुआ है ना, this 5 having spikes, ये spikes दिख रहे हैं ना इसके, this is your receptor. और ये रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पे है? ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, but actually it is a nuclear receptor. Understood? So this you have to keep in your mind. Okay, but whenever it is present in cytoplasm, it is present in inactive form. So I think it is understood. And this pink color which is present outside, okay, this is your steroid. Whatever drug you are taking, okay, अगर आप ड्रग भी नहीं ले रहे हो तो cortisol, all these steroids are secreted in our body. हाइड्रोकॉर्टिजोन हो गया आपका, योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज एल्डोस्टेरॉन हो गया, ऑल दीज आर सीक्रेटेड इन आवर बॉडी. या फिर जो भी आप बाहर से स्टेरॉइड लेते हो, प्रेडनिसोलोन हो गया, हाइड्रोकॉर्टिजोन, दे ऑल, ये वो है. दिस इज योर लिगैंड. ओके, दिस इज योर ड्रग, और दिस इज द नेचुरल मटेरियल, नेचुरल सब्सटेंस विच इज secreted from the body. So this is the your steroid. Okay, it will first go enter, or you can say it will first enter inside the cell membrane, it will go into the cytoplasm. Understood all of you? ये आपका G लिखा हुआ है, that is suppose it is the glucocorticoid. So first it will enter inside the cytoplasm, it will go and bind with this receptor. Okay, अभी ये जो receptor है, it is little bit complicated, आप देख सकते हो. इसके एक पार्ट में you are having the COH group, that is the carboxy group is present. So ये जो glucocorticoid receptor binding site है, it is present. ये आपको this can be asked in your exam कि जो glucocorticoid binding site है, it is located close to COH group, that is the carboxy group. So this you have to remember. So it is located close to the COH group or carboxy group. GR is the glucocorticoid receptor. Now ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, it is containing the spikes. ये दिख रहे हैं आपको spikes. So this is called as the DNA binding domain. This will bind with the DNA. Okay, because as I told you, it is a nuclear receptor. और न्यूक्लियस, जब भी कोई रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है तो वो कहाँ पे बाइंड होगा? It will bind with the DNA. It will initiate the process of transcription. So that you have to remember. So this part, ये जो ये येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, this is the DNA binding domain which later on will bind to the DNA. और ये लास्ट पार्ट, ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, this last one, जो इसकी टेल है, it contains 3 proteins. ये दिख रहा है आपको NH2 group, okay, and it contains 3 proteins. इन तीनों का नाम क्या है? IP, HSP70 and HSP90. तो ये भी आपको वाइवा में पूछा जा सकता है that what are the 3 proteins which are associated with your GR receptor. Okay, so that I'll tell you what is that. अभी हमारा major concern, अभी one thing is remaining, that is these zinc finger. ये zinc finger होते क्या है? So these zinc fingers are actually ये जो zinc finger है ना, these are not only zinc. They contain amino acid, and that amino acid is present in complex form with a zinc. या फिर आप बोल सकते हो chelate. What is chelate? Chelate is a complex. Okay, so this is actually the chelate. This yellow part, it is the chelate or the complex which is formed by amino acid and zinc fingers. इसको fingers क्यों बोला? Because these are the finger-like projection. Okay, now what I was telling you, HSP90 and HSP70. So what is HSP? It is the heat shock protein. Okay, it is the heat shock protein that you have to remember. And what is IP? That is the immunophilin. Okay, so what is IP? Immunophilin. It is the heat shock protein 70 and 90. So I think आपको ये structure पूरा clear हो गया. Okay, this is your nucleus. Nucleus में क्या होता है? Your DNA is there. DNA में जैसे हमने thyroid hormone में पढ़ा था that there is a specific binding site for thyroid hormone. उसी तरीके से ये DNA पे एक स्पेसिफिक साइट होता है फॉर द बाइंडिंग ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड.
तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अकेला जाके बाइंड नहीं होता है डीएनए के साथ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है and then this complex goes and binds with this DNA and then the process of transcription starts and after that the process of translation starts. Okay, now we will start the procedure क्योंकि यहाँ तक हमने अभी ये रिसेप्टर का स्ट्रक्चर देख रहे थे. Okay, so this is your glucocorticoid. It will enter inside the cell. It will bind with the it will bind with its position which is present near the carboxy group, okay, of GR receptor, that is of glucocorticoid receptor. After binding with it, इसके बाद bind होने के बाद क्या होता है, after binding with it there is a site on this receptor which is called as the dimerization site. Understood all of you? Just remember that there is one more site which is not shown here which is called as the dimerization site. तो जैसे ही ये स्टेरॉइड ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, that dimerization site is exposed. Okay, so what is the meaning of this sentence? Dimerization site is exposed का मतलब होता है that this receptor undergoes dimerization. Okay, now what is dimerization? Dimerization is what you will say, it is a type of addition reaction in which two molecules of the same compound they bind together. What is dimerization? It is binding of the two molecules of the same compound and it is called as dimerization. Understood all of you? तो जैसे ही ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, the dimerization site will be exposed or it will appear and this receptor will undergo dimerization. ये एक काम होगा. दूसरा काम क्या होगा, ये जो तीनों प्रोटीन है HSP70, HSP90, that is heat shock protein and the immunophilin, all these proteins will be dissociated. Understood? So what is the meaning of dissociation? Why the dissociation is required? Okay, actually these three proteins which are associated, they are responsible for inactivity of the receptor. समझ में आया? तो जैसे ही स्टेरॉइड बाइंड होगा, ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, so that this receptor will now become active. It will undergo dimerization and after all these things it will enter inside the nucleus. See this, ये dimerization अभी आपको समझ में आएगा. See, this is the dimer. Are you getting? See this, this is one molecule, okay, and this is the second molecule. So this is called as dimerization. यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा था. This is called as dimerization. So I think it is clear now. Now what will happen? ये जो receptor है वो activate हो गया. It has entered inside the nucleus. It has bind to the GRE. What is GRE? It is the glucocorticoid receptor binding site present on the DNA. Are you getting? इसको हम लोग और भी एक it is also called as the ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट. ओके, अभी क्या होता है, जैसे हमने थायराइड हार्मोन में पढ़ा था TRE, थायराइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, उसी तरीके से GRE होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट. सी, DNA इज देयर, ऑल ऑफ यू नो. अभी DNA पे हर जगह पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल नॉट बाइंड, या फिर ऑन एवरी साइड थायराइड रिसेप्टर एलिमेंट on every side the thyroid receptor complex will not bind. Are you getting? So हर चीज के लिए there is a separate site. उसी तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के लिए DNA पे एक साइट होता है जिसको हम बोलते हैं GRE. Are you getting? Glucocorticoid responsive element. So this receptor, this activated receptor which is containing the glucocorticoid will bind to the GRE and there will be transcription of this DNA. Understood? DNA का transcription होगा. So all of you know that after transcription there is formation of mRNA. mRNA will be formed. This mRNA will move out of the nucleus. Okay? जैसे कि हमने थायराइड हार्मोन में पढ़ा था, खाली दोनों का डिफरेंस क्या है? थायराइड हार्मोन वाज डिफरेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर इज डिफरेंट, द मोड ऑफ एक्टिवेशन इज डिफरेंट. Are you getting? So that is the difference between both. So now what will happen? This mRNA will go to ribosome, and all of you know ribosome में there is synthesis of protein. So the protein will be synthesized and that will be utilized. Understood? Now see, आपके
आपका जो चैप्टर है, इट इंक्लूड्स बोथ corticosteroids as well as antagonists also. So even if you are taking antagonists, they will also produce the they will also be having the same mechanism of action. खाली फर्क क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस will come here. If you are using corticosteroids, they will stimulate the process of transcription. As a result, the protein synthesis will be there, which is required. But if you are taking antagonists, they will inhibit the process of transcription and there will be no synthesis of protein. That is the only difference between the mechanism of action of steroids and steroid antagonist. I think it is clear now. Okay, now in next slide you will see. See, it is written in a flowchart way. Glucocorticoids penetrate the cell membrane, which I have told you. It binds to GR. What is GR? Glucocorticoid receptor. Where it is present? It is present in cytoplasm in inactive form. Okay. Where this steroid binds? It binds with the steroid binding domain, which is present near the COH group, which is present near the carboxy terminus. Okay. Now, जैसे ही steroid bind होगा, there will be dissociation of complex protein. What are these complex protein? वो जो मैंने आपको अभी 3 proteins बताए थे, HSP90, HSP70 and immunophilin. They all will be dissociated, and this I told you. After dissociation, the dimerization region is exposed. And whenever this region will be exposed, the receptor will undergo dimerization. What is dimerization? It is the type of addition reaction in which the two molecules of the same compound will bind together. आपने देखा ना, न्यूक्लियस में जाने के बाद आपको दो GR molecules दिख रहे हैं with 2 steroid molecules which are bound to it. Are you getting? That is dimerization. So after that dimerization, the steroid bound receptor dimer. Okay, एक तो आपका वो जो कॉम्प्लेक्स है, what it contains, एक तो आपका ड्रग हो गया, एक आपका रिसेप्टर हो गया, एंड एक आपका डाइमराइजेशन. दैट इज द 3 थिंग्स आर देयर. दिस होल कॉम्प्लेक्स ट्रांसलोकेट्स टू द न्यूक्लियस बिकॉज इन साइटोप्लाज्म इट वाज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म. अभी वो एक्टिव हो गया है, तो वो कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर जाएगा. इट विल बाइंड विद द और इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस called as the GRE. What is GRE? Glucocorticoid responsive element. After that, yes, it is present in the regulatory region of the appropriate gene. There is as I told you, there is a specified position. So GRE का भी एक specified position होता है, वहाँ पे जाके ये bind होता है. Then transcription is either initiated or stopped. This also I told you. If you are using an agonist, the transcription will be initiated. If you are using antagonist, the transcription will be stopped. Okay. After that, this mRNA will be generated. अभी आ रही है आवाज? हेलो, कहाँ से नहीं आ रही है आवाज? मीन्स फ्रॉम विच पॉइंट यू आर नॉट एबल टू हियर? नाउ इज इट ऑडिबल? ओके, ठीक है. So what I was telling, if you are using agonist, the transcription will be initiated, otherwise it will be stopped. Okay, translation होगा, finally protein will be synthesized, and basically those proteins are responsible for producing any type of action, whether it is agonist action or antagonist action. So I think it is clear. अभी आपको mechanism of action, see, major part is your, one of the major part is your mechanism of action, and since you are in final year, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट सेल्यूलर लेवल. अंडरस्टूड? तो ये आपको ऐसा नहीं है कि जैसे आप पहले पढ़ते थे कि हाँ भाई, जैसे हमने बार्बिचुरेट का पढ़ा था, दैट बार्बिचुरेट इट विल कम एंड बाइंड, इट विल कॉज द एंट्री ऑफ क्लोराइड आयन, हाइपरपोलराइजेशन, डिप्रेशन. वी हैव रेड in medicinal chemistry you are studying like this, but in ecology you have to study the mechanism of action at cellular level. Okay, so आपको ये लिखना, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप एक आउटलाइन लिखोगे. आउटलाइन कैसे लिखोगे? यहाँ वहाँ पे आप ये सब एक्सप्लेन करने नहीं जाओगे. यू विल जस्ट से that glucocorticoid will bind with the receptor. You will write how the receptor is there. There will be transcription, translation, action is produced.
but in ecology you have to explain this, and it will be very good if you use the diagram also. Okay, so I think it is clear now. Now we go to the synthesis of, see, this diagram is also taken from K.D. Tripathi. Okay, but this is present in your chapter. So how the, see, steroid hormones, as I told you, glucocorticoid, mineralocorticoid, and androgens. So all the hormones are synthesized from cholesterol. This you have to keep in mind. So yes, before synthesis of hormone, any type of hormone, a message should come from the hypothalamus. हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज सेंड करेगा पर्टिकुलर ऑर्गन को या पर्टिकुलर ग्लैंड को, तभी आपका सिक्रीशन होगा. ओके, सो फॉर द, इफ यू विल सी द रेगुलेशन ऑफ द हार्मोन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक. ओके, जैसे हमने थायराइड हार्मोन का पढ़ा था, हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एंड एज ए रिजल्ट द हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स द थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच सिक्रीट करता है. That TRH causes the release of TSH from pituitary gland, and that TSH goes to the thyroid gland and causes the synthesis and release of T3 and T4. This is the mechanism of action of release of all the hormones. Are you getting? Or you can say regulation of all the hormones. So if you will see, क्योंकि it is also a part of your syllabus, how the secretion of steroid hormones is regulated. Okay. For that you have to write the same thing, but here the name of the hormone will be different. So hypothalamus क्या secrete करेगा? CRH. What is CRH? It is the corticotropin releasing hormone. It will go and act on the pituitary gland. What the pituitary gland will secrete? It will secrete ACTH. What is ACTH? Adrenocorticotropic hormone. That ACTH will go to the adrenal cortex, and then your adrenal gland will secrete all these hormones. Are you getting? Aldosterone हो, चाहे आपका हाइड्रोकॉर्टिजोन हो, that is ग्लूको हो या मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो, वो कब secrete होता है? When a message comes from pituitary gland via ACTH. So regulation आपको याद रखना है. Okay, CRH comes from hypothalamus. पिट्यूटरी से क्या सिक्रीट होता है? ACTH. ACTH कहाँ पे जाता है? एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है, पर्टिकुलरली एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, causes the release of all these hormones, whatever it is required. Okay, and basically it is synthesized from cholesterol. So first of all, what will happen? From ACTH की वजह से the cholesterol will become available for the synthesis of hormones. Okay, so now what will happen? This cholesterol will be converted into pregnenolone. Pregnenolone से three things will be formed. One is progesterone, okay, 17 alpha hydroxy pregnenolone, and dehydroepiandrosterone. These three things are synthesized from pregnenolone. Okay, इसका आप डिटेल में पढ़ोगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में. Okay, there आपको वहाँ पे प्रॉपरली समझ में आएगा कि which what is the addition taking place, what is getting removed from the structure, and how you are getting progesterone from pregnenolone. That you will study in medicinal chemistry, and if you want I can take in the next lecture. So from cholesterol pregnenolone is formed. From pregnenolone three things are synthesized depending upon the need: progesterone, 17 alpha hydroxy pregnenolone, and dehydroepiandrosterone. ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है. ओके, नाउ सी, प्रोजेस्टेरॉन से 11 डेसऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन बनता है, देन कॉर्टिकोस्टेरॉन बनता है, एंड एल्डोस्टेरॉन इज फॉर्म. Okay, aldosterone is a mineralocorticoid. From pregnenolone, 17 alpha hydroxy pregnenolone is formed, then progesterone, that is 17 alpha hydroxy progesterone, then 11 desoxy hydrocortisone, and then hydrocortisone. Now there is one alternate pathway also. Pregnenolone से progesterone बनने के बाद from progesterone also there can be synthesis of hydrocortisone. ये आपको एरो से क्लियर कट हो रहा है. ओके, प्रोजेस्टेरॉन से डायरेक्टली आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन भी सिंथेसाइज हो सकता है, एंड अगेन हाइड्रोकॉर्टिजोन भी सिंथेसाइज हो सकता है. ओके, एंड थर्ड स्टेप यू कैन सी, फ्रॉम प्रेग्नेनोलॉन 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलॉन इज फॉर्म, एंड फ्रॉम दिस dehydroepiandrosterone is formed, and from dehydroepiandrosterone androstenedione and testosterone is formed. Now as you can see here, one thing I would like to tell you,
जो एंड्रोजेंस होते हैं दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, इसका जो सिंथेसिस होता है इट इज सिंथेसाइज्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो दैट इज व्हाई आप ये देख सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलॉन सिंथेसाइज हो रहा है एंड फ्रॉम प्रेग्नेनोलॉन aldosterone and hydrocortisone are directly synthesized, but for the synthesis of androgen 17 alpha hydroxypregnenolone is required. तो अगर आपका 17 hydroxypregnenolone है तो major part of the 17 alpha hydroxypregnenolone will be forming hydrocortisone and small part of it will go for the synthesis of androgens. That is why you can explain this. That is why the synthesis of androgens is less, because आपका glucocorticoid as well as your sex steroids both are synthesized from the same precursor. What is that precursor? 17 alpha hydroxypregnenolone. Understood all of you? So इससे भी बन सकता है, या फिर you can see the second step, 17 alpha hydroxyprogesterone से androstenedione बन सकता है. 11 okay, and from androstenedione testosterone can be formed. So there are 2-3 pathways for the synthesis of testosterone. Understood all of you? So it is explained in a through arrows which is easily understood. I don't think इसमें आपको कोई डाउट आएगा. कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलॉन बना, इससे ये दो पार्ट्स दैट इज एल्डोस्टेरॉन हाइड्रोकॉर्टिजोन बना, एंड फ्रॉम दिस प्रोजेस्टेरॉन you can also go for the synthesis of hydrocortisone, and from this pathway you can go for 2 more pathways, okay, for the synthesis of testosterone. It is very much clear from this diagram. Okay, आप लोग फिर भी पढ़ो और फिर कोई डाउट है तो you can ask me in the next lecture. Okay, okay. So these are the 2 things. Hydrocortisone is the glucocorticoid and aldosterone is the mineralocorticoid. See, this meeting will be ended in 10 minutes. So let me take one screenshot, then we will start again. Just a minute. See, one more thing is there. Okay, so what I was telling is, देखो आप लोग के मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग ऑप्शन रहता है, तो आप लोग भी एटलीस्ट वॉट एवर लेक्चर आई टेक यू रिकॉर्ड द लेक्चर फॉर 15 minutes. Okay, so you have to record, any one of you, or you can decide among yourself. All of you can record because we have to produce it. Okay, so all of you can record. So अगर मेरे पास से रिकॉर्डिंग डिलीट होती है तो that can be utilized. So what I was telling, hydrocortisone is a glucocorticoid. 10 to 20 mg is daily secreted, and more quantity of the steroids are secreted in morning hours. It has been seen, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो सबसे ज्यादा कब सिक्रीट होता है, या मेलाटोनिन सबसे ज्यादा कब सिक्रीट होता है, ड्यूरिंग द स्लीपिंग टाइम, बट द स्टेरॉइड्स आर सिक्रीटेड मोस्टली इन मॉर्निंग आवर्स. Okay, why in morning hours? Can anybody tell me how you can relate the secretion of steroids with morning hours? Why the secretion is more in morning hours? Can anybody tell me? See, just now I told you that steroids में अगर आप glucocorticoid लोगे तो glucocorticoid are increasing the level of glucose. Are you getting? And whenever you are in awake position, जब आप उठ रहे हो मॉर्निंग आवर्स में, तो सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. So for that purpose, accordingly our body system is designed. Okay, जिस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा जब होती है तब वो सिक्रीट होता है. It is our natural mechanism.
Okay, and aldosterone, what is the normal in this is the normal dose which is secreted in a normal healthy individual, 0.125 mg daily. You can just imagine mg 0.125 mg कितना quantity होता है, but that is maintaining your BP all over the day. It is maintaining your electrolyte balance all over the day. 0.125 mg. Okay, so this is the what you can say power of the steroids or hormones. Are you getting? So that you have to remember. Now we go to the very important point जो मैंने आपको last time बताया था, glucocorticoids and stress. So this is also taken from KD Tripathi. Now see what happens. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था दैट स्ट्रेस, इट हैज बीन सीन दैट इफ अ पर्सन इज टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, उसके ब्लड में कॉर्टिजोल का लेवल ज्यादा होता है. तो अगर कॉर्टिजोल का लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा होगा. स्लोली स्लोली अगर वो पर्सन कंट्रोल नहीं करेगा देन इट कैन कॉज अदर कॉम्प्लिकेशंस आल्सो. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इट इज आल्सो वेरी इजी. We will start from here. See this blue stress is written here. So whenever a person takes stress, okay, the higher centers are stimulated. Higher center मतलब आपका क्या है, hypothalamus. Okay, higher center is stimulated and from hypothalamus there is release of CRF. What is CRF? Corticotropin releasing factor. Are you getting? जिसको हम अभी बोल रहे थे CRH, corticotropin releasing hormone. So this hormone will go and act on anterior pituitary gland and from basophil cells, neutrophil cells होते हैं, basophil cells are also present. From basophil cells there will be release of ACTH. Okay, that is the adrenocorticotropic hormone which I told you. This ACTH will go and act on the adrenal gland. अभी adrenal gland में जब भी ACTH जाएगा, what will happen? There will be, see this, ये आप यहाँ से देखो, first you see this. ACTH will act on the adrenal gland. This is your cortex, and by acting on cortex, it will cause the release of aldosterone. See this. I think you are getting it. ACTH कहाँ जाएगा? It will go to the cortex. Cortex का जो सबसे बाहर का part होता है, this one, it is called as zona glomerulosa. There will be release of aldosterone from here. From the second layer, that is the zona fasciculata, there will be release of hydrocortisone, which is a what you can say, it is a glucocorticoid. And the third one is the zona reticularis, which is the innermost layer, and this is also responsible for secretion of androgens. Okay, and this is the adrenal medulla. So जब आप stress लेते हो तो दो चीजें होती है. First of all, due to stress the higher centers are stimulated. Okay, and second thing, what is happening here, see this, it is causing the release of, due to stress, the stress is directly acting on the medulla and causing the release of adrenaline. Are you getting? ये point आपको समझ में आया? If you are taking stress, either your higher centers or hypothalamus will be stimulated. This is the first thing. Second, due to that stress, all of you know fight and flight response of adrenaline. Are you getting? That will be stimulated. So what will happen here? There will be action of, due to that stress, there will be stimulation of adrenal medulla and release of adrenaline, which you can see it here. Okay. Now what do you mean by stress? Stress का मतलब जैसे fight or flight response when जब कहीं आग लग गई है या something untoward happens, very serious, आप डर जाते हो, you are stressed out. Okay, so under all these conditions there is release of adrenaline, and due to that release your heart rate increases, force of contraction increases. Are you getting? You are freezed at one place. आप suppose करो सांप आ गया अचानक से आपके पैर के पास, आपके हार्ट रेट वगैरह तो फास्ट हो जाएगी, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन विल बी फास्ट, बट यू विल बिकम इमोबाइल. आपको समझ ही नहीं आएगा. यू विल नॉट बी एबल टू रन. Because why you are not able to run? Because since your sympathetic nervous system is stimulated and your adrenaline is having relaxing effect on your muscles. Are you getting? That is why you become little bit immobile. So ये जो, this is how the stress, due to taking stress and due to release of adrenaline, you are getting the fight and flight response. So this is one part of this pathway.
Second, what happens, see this, whenever the adrenaline will be released, okay, there will be increase in blood pressure. Okay, now what I am telling, this is the second pathway which is mentioned here. Due to this, ये क्या होगा, due to activation of the adrenal cortex, there is release of aldosterone, which is a mineralocorticoid. So this mineralocorticoid will act on the kidney. Are you getting? Aldosterone acts on the kidney and causes the activation of renin-angiotensinogen system. All of you know that. From angiotensinogen, angiotensin 1 is formed due to action of renin. From angiotensin 1, angiotensin 2 is formed. Angiotensin 2 itself is a potent vasoconstrictor, plus it itself is a potent vasoconstrictor which will cause increase in BP, and on the second hand, it causes the retention of sodium and water, and it causes increase in blood pressure. Are you getting? So ये सारा, whenever you are taking stress, these all things are happening. And once the level of hydrocortisone or aldosterone या okay, not the sex steroid, mostly अगर level of aldosterone और hydrocortisone बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, then the negative feedback mechanism will be activated, and again it will go to the hypothalamus, and what it will do, it will inhibit the release of corticotropin releasing hormone, and the subsequent steps will be stopped. Understood all of you? So this is how our body responds to stress. ओके, ये तो मैंने आपको बताया कि कहीं पे आग लग गई या स्नेक आ गया. नॉर्मली भी जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, तो हम बोलते हैं ना स्ट्रेस लेने से बीपी बढ़ जाता है. तो बीपी क्यों बढ़ता है? दिस इज द रीजन. ओके, व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर वी आर टेकिंग स्ट्रेस, देयर इज रिलीज ऑफ ACTH that will act on the adrenal gland and cause the release of glucocorticoid. ओके, वी विल कंप्लीट दिस पार्ट. हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ये तो मैंने आपको बताया कि whenever the stress occurs suddenly, even if there is a person who continuously takes stress, तो आप ये देखोगे कि भले ही वो हेल्दी होगा, हेल्दी मतलब लुक वाइज हेल्दी होगा, द पर्सन विल बी लीन एंड थिन, बट उसका ब्लड शुगर लेवल एलिवेटेड हो सकता है, या फिर वो डायबिटीज, द पर्सन मे सफर फ्रॉम डायबिटीज बिकॉज कॉन्स्टेंट हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर विल बी देयर बिकॉज ऑफ टेकिंग स्ट्रेस एक्सेसिवली. Are you getting? So it has been seen, that's why I told you, it has been seen that people, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक लाइन बताई, that it has been seen that people who take large amount of stress, उनके ब्लड में कॉर्टिजोल का लेवल ज्यादा होता है. And what is that cortisol? It is nothing but it is the steroid whose level rises because of the increase in release of ACTH. So I think you have now understood what is the role of glucocorticoids, or you can say what is the role of steroids in case of stress, what is the role of cortisol in stress. Okay, so I think it is clear now. So now I would like to discuss some of the pharmacological action, and then we will close it for today. Okay, so first, ये मैंने आपको already उस दिन just एक outline दिया था. So first of all, I told you that glucocorticoids are responsible for carbohydrate and protein metabolism. Okay, so जो भी हमारे glucocorticoids है, they are responsible for carbohydrate metabolism, protein metabolism, as well as the fat metabolism, calcium metabolism also.
Okay, they inhibit intestinal absorption and enhance the renal excretion of calcium. What I told you, they inhibit the absorption of calcium. एक तो absorb नहीं होने देते blood में, दूसरा they increase the renal excretion of calcium. So what will happen? There will be loss of calcium from the body, and whenever there will be loss of calcium from the body, what will happen? The bones will become weak. Okay, and as a result, negative calcium balance will occur in our body, and that will cause the development of spongy bone. That is, spongy bone means your bones will become very weak. All of you know how a sponge looks. Okay, so the bone will become very weak because your calcium is getting removed from your body. So ये एक important point है that whenever you are taking glucocorticoids, they inhibit the absorption and they increases the excretion of the calcium. Then I told you about the carbohydrate metabolism, that glucocorticoid promote the deposition of glycogen. एक तरफ तो ये क्या करता है, it causes the deposition of glycogen in the liver and the muscle cells, and second it promotes the, that day I have told you, it promotes the gluconeogenesis, and next what it does, ये gluconeogenesis promote करता है. नेक्स्ट ये क्या करता है, इट डिक्रीजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द पेरिफेरल टिश्यू. जो पेरिफेरल टिश्यू है दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द ग्लूकोज, एज ए रिजल्ट द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज राइजेस. ओके, नेक्स्ट क्या करता है, इट कॉजेज द लाइपोलाइसिस, इट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ फैट. ओके, नाउ सी दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू दैट अगर लाइपोलाइसिस होगा तो क्या होगा. लाइपोलाइसिस होने की वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ फैट्स इन अवर ब्लड. नाउ व्हाट हैपेंस, द फैट डिपॉट्स इन डिफरेंट एरिया रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. इट हैज बीन सीन दैट हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे फैट जमा होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट. बट व्हाट हैपेंस, इट हैज बीन सीन दैट whenever a glucocorticoid is acting on fat, it is acting differently. Are you getting? Okay, जब हम ये डिस्कस करेंगे you will get it properly. Now see what happens. Subcutaneous tissue. Okay, now see. Okay. So what I was telling you is that the effect of the glucocorticoid on the fat differs from organ to organ. ऐसा देखा गया है कि जो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, they causes the lipolysis of the fats which are present in our limbs. जो हाथ और पैर में हमारे फैट्स है, जो एक्सट्रीमिटीज में फैट डिपोजिशन है, वो तो ब्रेक डाउन हो जाता है. बट वॉट एवर फैट दैट इज प्रेजेंट इन अवर शोल्डर, ओके, और यू कैन से दैट इज प्रेजेंट इन अवर नेक और दैट इज प्रेजेंट इन अवर फेस, उसके ऊपर ज्यादा एक्शन नहीं होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का. तो जस्ट इमेजिन हाउ अ पर्सन विल लुक. ओके, हाथ पैर एकदम पतले हो जाएंगे, the face will become big, and that is actually what you can say is a moon like face. moon मतलब हम वो मूवीज वाला मून लाइक फेस नहीं, चांद के जैसा चेहरा. एक्चुअली में जो फेस है ना वो चांद के जैसा गोल हो जाता है, अपीयर होता है, इट लुक्स लाइक अ बिग राउंड. आर यू गेटिंग? सो that is a symptom of Cushing syndrome which we will discuss. So why it happens is that the फैट लाइपोलाइसिस जो होता है वो बेसिकली कहाँ का होता है, एक्सट्रीमिटीज का. हाथ पैर एकदम पतले हो जाएंगे एंड देयर विल बी द फेस विल बी अपीयर बिग. ओके, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, नेक में डिपोजिशन ऑफ फैट. जस्ट इमेजिन अगर देयर आर शोल्डर पे बहुत ज्यादा फैट डिपोजिट है तो क्या होगा, इट विल अपीयर लाइक अ बफेलो हम्प के जैसा अपीयर होगा. सो जस्ट आई विल शो यू द इमेज इन द नेक्स्ट लेक्चर. द हम्प विल बिकम बिग, the neck will be swallowed, the face will become big, it will appear like a moon. Okay, the periphery, your hands and legs will become very thin. Okay, so that is seen due to the glucocorticoids. Okay, now see I will read it, just listen it. This action is permissive in nature. Okay, promote lipolysis due to glucagon growth hormone. Okay, that is different, that we will study again. Now see what it happens. Okay, this is the same which I have explained you. Moon-like face, fish-like mouth, and buffalo hump. The face will become round. Okay, जिसकी वजह से जो lips हैं वो छोटे दिखेंगे. So it will appear like, you know, you have seen a fish, round fish देखी है ना, उसका जो ये lips होते हैं, it is bulging outwards. Okay, तो वैसे उसके fish
Okay, don't laugh. The lips will grow. It will not grow outward, but it will appear. Don't laugh. It will appear to have grown outward, and the face will be big, and there will be hump on the shoulders. So you can, I will show you the diagram जब हम diseases पढ़ेंगे तो. And calcium के बारे में, as I told you, the person's legs and hands are very weak, and ऊपर से calcium loss भी है. So there are the condition will become severe. Okay, there are chances of easy fracture. Okay, next है आपका, just a minute. Next, what I was telling is water excretion. Okay, so that is the activity of aldosterone. And next is effect on CBS. Glucocorticoid restrict capillary permeability, maintain. Okay, so these all things we will, actually these all things are required to be studied in detail. So this we will do in the next lecture. So I think आज का आपको properly समझ में आ गया. आज हमने 3 topics पढ़े हैं. One is your, what is the role of glucocorticoids in stress, how they are synthesized, and what is the mechanism of action. So all of you read this properly, and we will study the next thing in the next lecture. Okay, pharmacological action is required to be studied in detail. Okay, so that is all for today. Thank you for your patient hearing. I will be sending you the quiz in short time. Okay, thank you so much. Who wants to read? These kids just have more wounds, just have